Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So to draw this rose, first we are going to draw a circle at the center and then we are going to continue that circle in a random fashion. तो ये रोज बनाने के लिए हमें पहले सेंटर में एक सर्कल बनाना होगा और उसी सर्कल को रैंडम लाइंस के साथ कंटिन्यू करते जाना है और उसके बाद कुछ कुछ लाइंस इनकम्प्लीट भी छोड़ने और देखिए मैं कैसे शेप्स बना रहा हूँ उसी टाइप से आपको पेटल्स जो है बना लेने हैं. सो यू हैव टू लीव सम ऑफ द लाइंस इनकम्प्लीट एंड just follow how I made the shapes and you'll know. You have to make the petals like that only. So next step would be to complete the background. So अगला step जो है हम लोग को बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट कर देना है. ठीक है, तो मैं वापस से बता दे रहा हूँ कि देखिए अब ड्राइंग आप देख ही पा रहे हैं. तो सेंटर में आप एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद उसको जैसे हम लोग करते हैं ना कि मतलब लाइन कंटिन्यू करते जाना है, 9 का शेप बना दीजिए एक तो उसी सर्कल से, फिर वही उसी को ओवरलैप करके और एक तो बना दीजिए. तो क्या होगा कि रैंडम लाइंस के साथ आप एक बड़ा सा सर्कल आप बना लेंगे रैंडम लाइंस के साथ. देखिए जो सेंटर में मैंने बनाया, उसके बाद जो पेटल्स का शेप वो भी बहुत कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो उसमें है ही नहीं. जितना भी आपको हो सके टेढ़े मेढ़े लाइन देखिए आपको बस बनाना है और बीच बीच में उस सर्कल के साथ उसको जोड़ते जाइए. 3-4 तो ऐसे करके बना दीजिए, बस हो जाएगा. सो आफ्टर मेकिंग अ सर्कल एट द सेंटर यू हैव टू मेक अ 9 आउट ऑफ इट और you can continue with the circle with random lines, and once that portion is complete, as you can see at the center there are a lot of lines and that will be the center. It's a big circle but with random kind of and irregular lines, and then you have to make the petals with random lines only. Like the lines does not have means it doesn't have to be straight at all. It must not be straight actually. Just create some lines like I have created and then join it with the circle, and that will make the petals of the flower, petals of the rose. So now we are coming to the main portion of the drawing which is the shading. तो अभी हम लोग मेन जो पोर्शन है ड्राइंग का वो है शेडिंग, उसमें आते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 या 2 टेक्निक यूज़ करेंगे. ठीक है, आपको जो पसंद आया आप वैसे ही इस्तेमाल कीजिए. सो टू डू द शेडिंग ऑफ द ड्राइंग वी आर गोइंग टू यूज़ एक्चुअली 2 to 3 types of shading, but you can use any kind of shading you want, but I will personally prefer one of the shading styles which I'll show you, and that is the scribbling style. So to do the shading you can use curved lines. Like now you can see, now I will do, first I'll mark the dark portion of the petal and then I'll give curved lines. You'll see I'll give curved lines. See, I'm giving curved lines and that gives the effect of the petal very nicely. Like the base will be dark, the joint portion, the joining line of the 2 petals, the upper portion of that line will always be dark and rest of the portion will be light, of lighter shading. So जो 2 पेटल्स का जो जॉइनिंग का जो हिस्सा है उस लाइन का जो ऊपर का पोर्शन है वो हमेशा डार्क होगा और बाकी का जो हिस्सा है वो वाला लाइट होगा. आप ऐसे कर्व्ड लाइंस जो है वो लाइन ऐसे करके देते जाएंगे तो आपका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा पेटल्स का. ऑल यू हैव टू गिव इज कर्व्ड लाइंस एंड दैट विल गिव द इफेक्ट ऑफ द पेटल्स. बट there is another technique which I have used and I found it quite effective for this drawing specifically. तो मैंने यहाँ पे और एक तो टेक्निक यूज़ किया है जो मुझे लगा कि इस ड्राइंग के लिए सबसे बेहतर है. वो है कि आप
ओवल टाइप के स्क्रिबलिंग करते चाहिए। मैंने आपको पहले ड्राइंग्स में भी दिखाया कि कैसे ओवल टाइप के शेडिंग्स करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ओवल टाइप के छोटे छोटे ओवल बनाते जाना है और उसी से आपको पेटल जो है भरना है। उसके बाद आप कर्व्ड लाइंस वापस से देना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, ओवल का जो कुछ हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा, आपका जो शेडिंग का जो लाइन है वो भी आ जाएगा और भी बेहतर इफेक्ट आएगा। जो रोज का पेटल का जो एक्चुअल जो पैटर्न होता है वो पूरा आ जाएगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज मेक oval kind of shading, oval kind of scribbling like I have shown in my previous videos. So you have to do oval kind of scribbling. After that you have to give curved lines over it, like you can see now I am giving the ovals doing the oval scribbling on this petal. See, I filled up the entire petal with it, and now I am doing the curved lines. On top of the ovals we are going to give the curved lines. What it is going to do is it's going to highlight some of the curved portion of the ovals, and the lines will create the lines which we actually see in the petals of the rose. So what it will do, it will give a more natural look to the drawing, and it will give a better effect of the petals. The joining line of the two petals will be dark and the top portion will have a darker shade, and as you go further from that line the shading will be lighter. So now you see I am making water droplets. आप देखिए मैं अभी वाटर का पानी की जो बूंदें होती हैं वो जो गुलाब के ऊपर जो गिरी हुई रहती है उसको मैं बना रहा हूँ। देखिए कैसे बना रहा हूँ, बनाने का टेक्निक मैं बता रहा हूँ। आप जब ऑब्जर्व करेंगे पूरा ड्राइंग जब आप फॉलो करेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो टू मेक द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग सर्कल विथ लाइट ग्रे. The entire drawing has to be done in layers with light gray. Okay, so what I'm going to do is I'm going to create some circle and leave some of the portion of that circle white or the base shading whatever there is. That will give the effect of water droplets extremely nicely. So हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे सर्कल टाइप का सर्कल बना रहे हैं और सर्कल का कुछ पोर्शन हम लोग वाइट छोड़ दे रहे हैं, या फिर जो बेस में हम लोग जो मतलब शेडिंग कर चुके हैं वो वाला शेडिंग दिखने दे रहे हैं. इससे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट का जो इफेक्ट है वो आराम से आ जाएगा, वो नेचुरल पूरा इफेक्ट आ जाएगा. और यही टेक्निक पूरे ड्राइंग में मैंने रिपीट किया. I've used these techniques in the entire drawing, and frankly speaking there is nothing much else to explain. तो मैंने यही वाला टेक्निक पूरे ड्राइंग में यूज़ किया है. आप पूरा ड्राइंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. बस ऑब्जर्व कीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कैसे मैंने इसको किया, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं. सो जस्ट ऑब्जर्व द ड्राइंग, just finish the entire video and you'll know how I've created this and you can give it a try. So if you are liking this video till now and if you like the drawing, then give this video a thumbs up, subscribe to my channel and press the bell notification, because I'll be uploading more videos like this. And if you have any suggestion or you want to give any more ideas, then write down in the comment section. So until next time, goodbye and enjoy the rest of the drawing. So दोस्तों, इससे ज़्यादा और समझाने का कुछ है नहीं. मैंने ये वाला जो टेक्निक है जो मैंने अभी टेक्निक बताया, जितने भी टेक्निक्स, तो वही मैंने पूरे ड्राइंग में मैंने रिपीट किया है.
हल्के हाथों से पूरा लेयरिंग, एक के बाद एक लेयर बना के मैंने इसको बनाया। और इसी को वही चीज़ मैंने पूरे ड्राइंग में यूज़ किया है। आप देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए, आपको सब कुछ पूरा समझ में आ जाएगा कि मैंने जो जो बोला है वही मैंने यहाँ पे पूरा करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ड्राइंग अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिएगा वीडियो को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियोस का। तो इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं, बाकी का वीडियो आप एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलेंगे। गुड बाय।